विश्व कप तो समाप्त हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी जो अच्छी हुई, बहुत सारी चीज़ें थी जो हम आगे देख सकते हैं। दैट इज़ द इमर्जिंग प्लेयर्स। ऐसे कौन से खिलाड़ी रहे जिन्होंने इस विश्व कप के अंदर अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया, प्रभाव डाला, और आने वाले समय में इन खिलाड़ियों के ऊपर नजरें रहेंगी। तो चलिए इस रैप प्रोग्राम में इसके बारे में बात करेंगे। ये डिफरेंट स्ट्रोक्स रैप है आईसीसी T20 2023 के विश्व कप का, और इसके अंदर खास तौर पर उन खिलाड़ियों पे मैंने नज़रें रखी हैं, जहाँ हम सब ब्रॉडकास्टर्स नज़रें रखी हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं जो आगे आने वाले समय के अंदर हमारे फ्यूचर स्टार्स रहेंगे। तो पहले प्रेजेंट स्टार्स की बात कर लेते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया में तो आप किसी भी खिलाड़ी को देखेंगे तो वो स्टार ही दिखेगा, चाहे वो मूनी हो, लैनिंग हो, एशले गार्डनर हो। लेकिन ऐसे कौन से खिलाड़ी जिन्होंने अपना पहला विश्व कप खेला होगा और उन्होंने अच्छा दबाव डाला ऑपोजिशन पर? मेरे हिसाब से ऑफकोर्स मरूफा थी, जो विश्व कप खत्म होने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक अपनी प्रेजेंस क्रिएट करी। अंडर 19 खिलाड़ी हैं। हर्षिता रहीं श्रीलंका से, ऑफकोर्स टास्मिन ब्रिट्स साउथ अफ्रीका से, उन्होंने जिस तरीके से खेल दिखाया साउथ अफ्रीका के लिए, फाइनल में इम्पैक्ट नहीं कर पाई पर खेली तो अच्छा। ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ी जो मैंने नज़रें रखी, पर मेरे फेलो ब्रॉडकास्टर्स ने भी नज़र रखी। तो चलिए ये सारी बातें हमने करी थी विश्व कप शुरू होने से पहले कि विश्व कप का क्या इम्पैक्ट होता है, खास तौर पर बड़े खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी। तो विश्व कप का इम्पैक्ट ऑन प्लेयर्स कैसे रहता है, चलिए सुनते हैं। What does a World Cup, the impact on players, and in particular emerging players for sure, is it's that fulfilling of a dream for a start. I mean, every player has to dream at one stage of playing for their country and playing at a World Cup, whether it be a home World Cup or wherever it is, or your first World Cup. It's that opportunity to show what you can do. It's the opportunity to measure yourself as well against other players and some of the top opposition around the world. And you learn so much from it, and then hopefully can take it through your career into something else. And with the game becoming more and more professional, a World Cup is such a good opportunity for these girls to take their careers forward and really forge a name for themselves. It can only mean the world to them. Like I said, it's sort of a fulfillment of a dream. It's got to be very, very special. And for players that are playing for the first time, it could really set themselves up for the rest of their lives. The World Cup is something that there's so many eyes on, and players love playing in it. With the advent of a number of different tournaments around the world now, I think there's awesome opportunity for new players to put their hand up and be seen. We've got the WPL, which is coming on board, which is so fantastic for Indian domestic cricket, but also international cricket and the growth of women's cricket around the world. So I think this presents an opportunity for someone to say, I want my name in lights. I want to be that person that goes and plays in those tournaments. Well, World Cup is the biggest and the ultimate platform, and obviously for every player it's a dream to represent their country in World Cup. Especially for emerging player, it's obviously a proud moment of their careers, but I think it's also a filtered and fast track to the experience and exposure where they can play against one of the best, not one of the best, but probably the best players globally, and also realize where they stand in terms of their skill set, their mental toughness, fitness, and also what they need to do once they go back to be consistently performing at an international level. They learn by watching the players that what they do and why they are the best ग्लोबली। देखिए इमर्जिंग खिलाड़ी जब भी होते हैं ना, तो उन पे इम्पैक्ट अच्छा ही रहता है, क्योंकि वर्ल्ड कप है। एक बार चीज़ है कि आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि आप अपनी कंट्री के लिए विश्व कप खेल रहे हैं। वो जब यूनिफॉर्म आता है ना, जिस पे लोगो लगा होता है, और वो आईसीसी वर्ल्ड कप होता है, कंट्री का नाम होता है, ईयर होता है, तो एक अलग सी फीलिंग रहती है। तो इम्पैक्ट अच्छा ही होता है और अच्छा होना भी चाहिए। जो कॉन्फिडेंस है खिलाड़ी के अंदर, वो एक अलग तरीके से आता है, और वो एक एक्साइटमेंट लेवल होता है ना। कंट्री के लिए खेलना तो वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन जब वर्ल्ड कप खेलते हैं तो बहुत अच्छा। मुझे तो सारे वर्ल्ड कप याद है, पहला भी याद है, लास्ट भी याद है। कभी भी मैं युवा भी थी, कभी एक्सपीरियंस भी थी, फिर बाहर भी चली गई, पर कोई बात नहीं, ये मुझे लगता है। I think from a player's point of view, playing in any World Cup is always a massive honour. But what it does do is it shows you the characters of certain types of players. And especially the younger players coming through, you very quickly learn if they can cope with the pressure, or if perhaps they're not quite there or they're not quite ready. So that's the impact I think it has on players. You see
where individual players are at. You see if they can rise to the occasion, and you can see if they can also thrive in those pressured situations. So that's without a doubt the impact that a World Cup can have on a player. देखा, सभी को ऐसा लगा कि किसी युवा खिलाड़ी के ऊपर ख़ास तौर पर अगर आप विश्व कप में अच्छा करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें खुल जाती हैं, ख़ास तौर पर कॉन्फिडेंस का गेम है। ऑस्ट्रेलिया से पूछो, कॉन्फिडेंस में तो इतने सारे विश्व कप जीत गए, अब तो ऐसा लगने लगा है कि चलिए ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी के हकदार हैं, फाइनल में कौन सी टीम खेलेगी, अब तो ऐसा वक्त आ गया। पर चलिए, वक्त तो बदलता रहता है और अब बदलता भी रहेगा। जैसे मैंने अपना बैग टांग रखा है, पीछे गाड़ी खड़ी है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। और क्रिकेट का सिलसिला तो जारी रहेगा, क्यों? क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है ना, तो आप और मैं यहाँ ज़रूर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या कंटेंट आ रहा है और किसके बारे में बात हो रही है। सी यू इन इंडिया।